Hello friends, last lecture we have discussed different theories of acid and base. Today we are going to start next point, that is ionic product of water. Ionic product of water is also known as ionization constant of waters. Give the heading ionic product of waters. What is my ionic product of waters? The product of molar concentration of H plus ion and OH minus ion in pure waters or aqueous solution is constant at constant temperature. इस स्क्वाड उसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. व्हाट इज माय आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर concentration of the H plus ion and OH minus ion in pure water or aqueous solution is constant at constant temperature is known as the ionic product of waters. The pure water is a dissociated the small extents. प्योर वाटर का डिसोसिएशन ही कैसा होता है? स्मॉल एक्सटेंट में होता है. ओके, दैट इज द H2O. It gives H plus plus OH minus. प्योर वाटर का डिसोसिएशन कैसा होता है? स्मॉलर एक्सटेंट में होता है. ओके, H2O it gives H plus plus OH minus. The applying the law of mass action. यहाँ पे law of mass action is dissociated reaction के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? law of mass action. K is equal to concentration of the H plus into concentration of the OH minus divided by the concentration of the H2O. But the water is the constant. यहाँ पे water एक कैसा है? But the water is the constant because they are present. वो कैसा present है? Excess है. वो कैसा present है? Excess है. But the water is a presently कैसा है? Constant because they are presently excess. जो भी substance excess होता है they are considered to the, उसको क्या consider करना पड़ता है? Constant. Therefore, K is equal to concentration of the H plus into concentration of OH minus. ये divided by the what? Constant. ओके, अभी ये कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लेंगे. K into constant is equal to concentration of the H plus into concentration of the OH minus. Okay, now K into constant is a taken as the new constant. A K into constant is a taken as the new constant. That is a कौन सा constant लेंगे? KW. K into constant is a taken as the new constant. Therefore, KW is equal to यहाँ पे concentration of the H plus into concentration of the OH minus. Okay, where Kw is the ionic product of water. Kw is the क्या है? Ionic product of waters. Okay, and this ionic product of the water is only depend on the ionic product of water. ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? The ionic product of water is a depend on the temperature. They does not depend on the amount of water. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर प्रेजेंट नहीं. कितना वाटर है उसके ऊपर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड नहीं है. द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. ओके, नाउ the values of the ionic product of the water is a determine the experimentally. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन की है? द वैल्यूज ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज फाउंड टू बी 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin temperature.
298 केल्विन टेम्परेचर को एक्सपेरिमेंटली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, उसको इस तरह से लिखेंगे Kw इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ एट 298 केल्विन। ख्याल में रखो, what is the values of the ionic product of water? The values of the ionic product of water at 298 Kelvin is the 1 into 10⁻⁴. Okay, this is the information about the ionic product of water. यहाँ पे ऐसा लिखेंगे डेरिवेशन बोल के, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, डेरिवेशन। व्हाट इज माय आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर? डेफिनेशन बताई दी, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन OH माइनस आयन इन प्योर वाटर और aqueous solution is constant at a constant temperature is known as the ionic product of water. Okay, this is the ionic product of water. Kw is equal to molar concentration of the H plus into molar concentration of the OH minus, and the values of the ionic product of water at 298 Kelvin is experimental is determined by the कितनी determine किए हैं 1 into 10⁻⁴. Okay, now next points. Significance of ionic product of waters. अभी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। गिव द हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर्स। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के क्या दिखना है, सिग्निफिकेंस। The significance of the ionic product of water is used to determine the aqueous solution is acidic, basic and neutrals. ख्याल में कह दिया, ionic product of water is used to determine the aqueous solution एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से एक्वस सोल्यूशन है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, वो किससे डिटरमाइन कर सकते हो अपन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। इन प्योर वाटर्स, कौन से वाटर में, इन प्योर वाटर्स, in pure water the molar concentration of the H plus is equal to molar concentration of the OH minus is equal to 1 into 10⁻⁷. Okay, therefore the pure water is कैसा neutral, because in there contain the equal number of the H plus ion and OH minus ion। इसके वजह से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, इसके वजह से जी सोल्यूशन में H प्लस यानी OH माइनस कैसा है, इक्वल है। मतलब प्योर वाटर में H प्लस यानी OH माइनस ये कैसे इक्वल है, देयरफॉर द प्योर वाटर ये कैसा है, न्यूट्रल है। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इन प्योर वाटर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, 1 into 10⁻⁷। Therefore, the pure water is the neutral because in there contain the equal number of the concentration of the H plus and OH minus. Okay, now if the molar concentration of the H plus is greater than the OH minus, दे आर दी, वो कैसा रहता है, एसिडिक। जिस सॉल्यूशन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस OH माइनस से ग्रेटर होगा तो कैसा है, एसिडिक है। ई OH माइनस is greater than the H plus ion, the solution is the solution कैसा रहता है, बेसिक रहता है। Therefore,
The ionic product of water is used to determine the aqueous solution is acidic, basic and neutral. Okay, this is the significance of the ionic product of waters. Now next point, अभी आपको next point देखना है, that is the, give the heading, pure water is a bad conductor of the electricity. Pure water, ये क्या है? Pure water is the bad conductor of electricity. Pure water is a bad conductor of electricity. प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. व्हाई द प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? द प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. प्योर वाटर ये क्या है? प्योर वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. Therefore, the pure water is a dissociated the small extent, and they are the produce the low concentration of the H plus and OH minus. ख्याल में रखिए, pure water is a weak electrolytes. Therefore, they are dissociated the small extents, and they are produce the low concentration of the H plus and OH minus ion. The electrical conductance, कौन सा conductance? Electrical conductance. The electrical conductance of liquids is a depend upon the number of the, किसके ऊपर डिपेंड है? आयन के ऊपर डिपेंड है. The electrical conductance of liquid is a depend upon the number of ions. Therefore, the pure water is a bad conductor of the electricity. इसकी वजह से प्योर वाटर एक ऐसा है बैड कंडक्टर. क्यों है? बिकॉज दे आर दी प्रोड्यूस द लो कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस एंड OH माइनस आयन. इसके वजह से प्योर वाटर एक ऐसा है बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. Why the pure water is the bad conductor of the electricity? ये पॉइंट आपको फिर से बताता हूं. प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. Therefore, they are dissociated the small extent, and they are produce the low concentration of the H plus and OH minus. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लिक्विड का एक किसके ऊपर डिपेंड रहता है? नंबर ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड रहता है. लेकिन प्योर वाटर में ज्यादा आयन फॉर्म नहीं होते हैं. इसके वजह से प्योर वाटर इज एक ऐसा है बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड. गिव द हेडिंग, ionization of polyprotic acid. Now listen carefully. Ionization of the polyprotic acid. That is, first of all, you must know the monoprotic acid. Monoprotic acid. What is my monoprotic acid? An acid which are dissociate give the only one protons. Give the only one proton in per molecules. In per molecules. इस कॉर्ड उसे कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड. An acid which are dissociated give the only one proton in per molecule. इस कॉर्ड उसे कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड. What is my monoprotic acid? An acid which are dissociated give the only one proton in per molecule is known as a monoprotic acid.
For example, HNO3. नेक्स्ट वन इज उसके बाद में एग्जांपल लेंगे CH3COOH, HCOOH, अनदर एग्जांपल HCl. दैट इज ये पूरे के पूरे कौन से एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है. कौन सा एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है. क्यों मोनोप्रोटिक एसिड है? आपको क्लियर होना, मोनोप्रोटिक एसिड है आपको क्लियर होना चाहिए. एन एसिड which are dissociated give the only one proton in per molecule is called monoprotic acid. For example, एग्जाम्पल ख्याल में रखिए, क्योंकि इसका डिसोसिएशन करने के बाद वो एक ही प्रोटॉन देता है, therefore that is known as a monoprotic acid. डाइप्रोटिक एसिड किसे कहते हैं? An acid which are dissociated give the two proton in per molecule. एक ही मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन मिलते हैं? 2 प्रोटॉन मिलते हैं. That is known as a diprotic acid. What is my diprotic acid? An acid which are dissociated give the 2 proton in per molecule is known as a, उसे क्या कहते हैं? diprotic acid. For example, H2SO4, H2S. अभी इस एसिड का डिसोसिएशन करने के बाद वो कितने प्रोटॉन देते हैं? ओनली 2 प्रोटॉन. Therefore that is known as, उसे क्या कहते हैं? डाइप्रोटिक एसिड. ट्राइप्रोटिक एसिड. व्हाट इज माय ट्राइप्रोटिक एसिड? ख्याल में रखिए, ट्राइप्रोटिक एसिड किसे कहते हैं? एन एसिड which are give the 3 proton. An acid which are give the 3 proton when they are dissociated in per molecule is known as, उसे क्या कहते हैं? ट्राइप्रोटिक एसिड. An acid which are dissociated they are give the 3 proton in per molecule is known as, उसे क्या कहते हैं? ट्राइप्रोटिक एसिड कहते हैं. कौन सा एसिड? ट्राइप्रोटिक एसिड. देखिए फॉर एग्जांपल लेता हूं ट्राइप्रोटिक एसिड का. देखिए H3PO4, दिस इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड. अब इस ट्राइप्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन बताता हूं. H3PO4 it gives H plus plus H2PO4 minus. Okay, एक प्रोटॉन मिला. सेकंड वन इज H2PO4 minus, it gives H plus plus HPO4 2 minus से 2 प्रोटॉन. and another one is HPO4 2 minus, it gives H plus plus, that is a PO4 3 minus. देखिए ट्राइप्रोटिक एसिड है. when they are the triprotic acid is dissociated, they are give the, उन्होंने कितने प्रोटॉन दिए? 3 प्रोटॉन दिए. therefore that is known as a triprotic acid. आपको आयोनाइजेशन ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड एक कंसेप्ट देखने के लिए मैंने बताया आपको व्हाट इज मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड. Monoprotic acid, an acid which are dissociated give the only 1 proton is known as a monoprotic acid. Diprotic acid, an acid which are dissociated they are give the, वो कितने प्रोटॉन देते हैं? 2 प्रोटॉन is known as a diprotic acid. and what is my triprotic acid? An acid which are dissociated they are give the 3 proton in per molecule is known as a triprotic acid. ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स अभी यहाँ पे बताता हूं आपको. व्हाट इज माय आयोनाइजेशन ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड. यहाँ पे मैंने आपको पॉलीप्रोटिक एसिड में मैंने बताया आपको मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड. नाउ व्हाट इज माय आयोनाइजेशन ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड? An acid which are dissociated give the more than 1 proton.
An acid which are dissociated give the more than the one proton is known as, उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। जिस एसिड में डिसोसिएशन करने के बाद वो मोर देन वन प्रोटॉन देता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड H3PO4। कौन सा भी जो कितने प्रोटॉन देते हैं, मोर देन वन प्रोटॉन देता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड। नाउ कंसीडर द ट्राइप्रोटिक एसिड। क्या ट्राइप्रोटिक एसिड कंसीडर करेंगे, कंसीडर द ट्राइप्रोटिक एसिड एंड इट्स आर द डिसोसिएटेड रिएक्शन इज द, उसकी कौन सी, डिसोसिएटेड रिएक्शन एंड इट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द। बिफोर द, वो करने के पहले मैं आपको एक ट्राइप्रोटिक एसिड बताता हूं, दैट इज अ, लिसन केयरफुली, H3A, दैट इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड। जनरल रिएक्शन देखिए, H3A इट गिव्स H प्लस प्लस व्हाट, H2O माइनस। नेक्स्ट वन इज अ H2O माइनस, इट गिव्स H प्लस प्लस व्हाट, HA माइनस। आणि another one is a HA minus, it gives H plus, यहाँ पे 2 minus, H plus plus what, A3 minus। ये क्लियर होना चाहिए आपको सबसे पहले। What is my ionization of the polyprotic and acid which are dissociated give the more than one proton is known as a polyprotic acid। ये एग्जाम्पल बताया मैंने आपको पॉलीप्रोटिक एसिड का, H3PO4। okay, now consider the polyprotic acid is a H3A, a polyprotic acid है, and its dissociation and dissociated constant is the, उसकी dissociated reaction and dissociation constant reaction is। देखिए फिर अभी मैंने यहाँ पे आपको 1 by 1 उसका 3 टाइम क्या करके बताया, डिसोसिएशन। नो अभी उसका डिसोसिएटेड रिएक्शन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, लिसन केयरफुली, Ka1 is equal to concentration of the H plus into concentration of the H2O A divided by the concentration of the H3A। ओके, ये पहला उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट रिएक्शन का। सेकंड वन इज Ka2 is equal to concentration of the H plus into concentration of the Ha2 minus divided by the H2A minus। Next one is the Ka3 is equal to इसका, that is the H plus, it gives A3 minus, it divided by the H divided by the Ha2 minus। ओके, अभी यहाँ पे मैंने उसका डिसोसिएशन किया और उसका क्या लिखा, ईच रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेगा इस रिएक्शन का, Ka is equal to, बताइए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, पहले ओवरऑल डिसोसिएशन करेंगे, that is the overall dissociated H3A, it gives H3A, it gives, that is a 3H plus plus A3 minus। ओके, अभी उसका डिसोसिएटेड K is equal to concentration of the H plus 3 and here is a concentration of A3 minus divided by the concentration of the H3A। ये ओवरऑल डिसोसिएटेड कांस्टेंट ऑफ द किसका, H3A पॉलीप्रोटिक एसिड का डिसोसिएटेड, ओवरऑल डिसोसिएटेड कांस्टेंट लिखा मैंने K। नाउ we can also determine the three equal state of its equilibria। थ्री इक्वल स्टेट में आप उसका क्या कंसीडर कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसीडर। वी कैन कंसीडर द on the three stage of its equilibrium is, देखिए
3 स्टेज में उसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। नाउ Ka1 into Ka2 into Ka3 is equal to, बताइए, first one is a concentration of the H plus into concentration of the H2A minus divided by the H3A into concentration of the H plus into concentration of the Ha2 minus divided by the concentration H2A minus into concentration of the what H plus into concentration of the A3 minus divided by the Ha2 minus. Okay, now here is the, देखिए यहाँ पे क्या कैंसल होगा अभी, H2A माइनस H2O माइनस इज कैंसल, Ha2 minus Ha2 minus is a cancel. Okay, now remaining is the, अभी remaining क्या है, बोलो, Ka1 into Ka2 into Ka3 is equal to H plus H plus H plus, that is the what is this H3 plus, कौन सा, सॉरी H3 plus नहीं, 3H, that is the ऐसा लिखेंगे H, that is the what H plus cube. Okay, now अभी यहाँ पे नेक्स्ट कौन रिमेनिंग है, ये 3 माइनस डिवाइडेड बाय द, अभी यहाँ पे क्या बचा है S3A. ओके, दैट इज अ ओवरऑल डिसोसिएटेड रिएक्शन ऑफ द ट्राइप्रोटिक एसिड, यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने जब 3 इक्विलिब्रियम स्टेज क्या की है, कंसीडर की है, 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या की है, कंसीडर की है। कंसीडर करने के बाद ही आपको यहाँ पे आ रहा है Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 इज इक्वल टू H प्लस क्यूब इंटू A3 माइनस डिवाइडेड बाय द H3A. ओके, नाउ द ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ दिस 3 पॉलीप्रोटिक एसिड इज द, उसकी ऑर्डर Ka1 into Ka2 into Ka3. Order of the ionization of that polyprotic acid, Ka1 is greater than Ka2 and Ka2 is greater than what, Ka3. This is the information of the ionization of the polyprotic acid. इस तरह से आप वो पॉलीप्रोटिक एसिड की क्या बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन, किस तरह से उसका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है. ओके, गुड डे, यहाँ पे रुकेंगे, गुड डे.